Today we are going to start with a new chapter, that is Introduction to PowerPoint, that is given on your page number 72. PowerPoint. What is PowerPoint and why we are using it? We will be studying it in this chapter. Microsoft PowerPoint or MS PowerPoint. In your lower classes, you have studied, in this class also we have studied Microsoft Word. हम लोगों ने Microsoft Word भी study किया था, that is MS Word or Microsoft Word. That was used to create a document, right? उसमें हम लोग documents create करते थे, right? But when we are talking about PowerPoint, in this PowerPoint software, we will be creating the presentation. हम इसमें क्या क्रिएट करेंगे? We will be creating a presentation. MS PowerPoint or Microsoft PowerPoint. It is basically a PowerPoint. It is basically a presentation software. We people create different types of presentations with the help of the PowerPoint software. हम पावरपॉइंट की हेल्प के साथ अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं एंड दैट प्रेजेंटेशन कैन बी शोन टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस. जब हमने उस अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन, इफ आई वांट टू कन्वे इट, अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन किसी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कन्वे करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आई कैन यूज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज द पावरपॉइंट. When I am making a presentation, इसमें I can add text, I can add images, I can add audio, as well as videos also in my presentation. मैं इसमें अपनी presentation में text, alphabets, numbers की form में, I can add the images, any kind of images that are stored on your computer, या आप online images भी add कर सकते हैं इसमें. You can add audio links also. Audio अगर कोई आपके पास है, कोई sound है that you wanted to add, you can add that also. Also videos. अगर आप कोई topic explain कर रहे हैं and you want a video to be shown, that video can also be added in your presentation using the Microsoft PowerPoint. Clear? Before starting with the components, components start करने से पहले we will be discussing two terms over here that are related to the present PowerPoint. Let us discuss the two terms. The first term that I am going to explain, that is the slide, and then we will be learning what is a presentation. Let us discuss these two terms first of all. Now, this is your book, computer book, right? I have opened the page. I am opening any page. This page, it contains the text. इसमें हमारे पास text भी है, इसमें हमारे पास images भी है, right? So this page, it contains the information. This page, it contains the information in the form of text, in the form of images, right? So this is a page of your book. This is a page of your book that contains the information. That contains the information. So similarly, slide is what? It is a page, a single page of a presentation. A single page of a presentation that has information. इसमें हमारे पास क्या होती है? इसमें हमारे पास क्या होती है? Information. That has information on it. Clear? So slide is what? It is a single page of a presentation
that has information in it. Any kind of information. टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन हो सकती है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस इज योर बुक विच कंटेन्स डिफरेंट पेजेस, जिसमें मेरे पास डिफरेंट पेजेस है. ऑन एवरी पेज आई हैव the text written and I have the images also. So it is containing the information. इसमें मेरे पास क्या है? Information. In the same way, when I am talking about slide, जब मैं slide की बात कर रही हूँ, that is also a single page of your presentation. आपकी presentation का single page, जिसमें मेरे पास क्या होती है? Information. Clear? Clear everyone? Any doubts to anyone? If it is clear, give thumbs up, beta. Okay, so slide is clear. When we are talking about slide, it is a single page of your presentation which will contain the information in it. Then coming upon to the next word. Presentation is what? It is a collection of different slides. जैसे आपकी बुक है, it is a collection of different pages. It is a collection of different pages. हर एक पेज में हमारे पास इंफॉर्मेशन है. In the same way, presentation is what? It is a collection of different slides, and every slide is containing the information in it. So presentation is what? Collection of different slides. Presentation of different collection of different slides. It is called as a presentation, and every slide it is containing any kind of information in it. Clear everyone? When we are talking about the slides mean a single page of your presentation. And when I am talking about the presentation, it is a collection of different slides. And every slide, it is containing the information in it. Clear? So I'm going to show you the PowerPoint window. Let me share the screen with you. See, this is your PowerPoint window. Microsoft PowerPoint window. Can you see the screen, beta? Okay. So this is your PowerPoint window. Here we are going to discuss the different components of the PowerPoint window. PowerPoint window के different components कौन-कौन से हैं? Whenever you open any kind of application software, कोई भी application software open करते हो, चाहे वो MS Paint है, either it is your Word, it is your logo, it is your MS Paint, it is your WordPad, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं बेटा, तो उसमें हमारे पास राजवीर बी अटेंटिव इन द क्लास, उसमें हमारे पास the main component that is present in every application software, that is the title bar. Title bar, it is present at the top of the word window. जो आपकी Microsoft PowerPoint की विंडो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इसमें जो आपके सबसे टॉप के ऊपर जो बार है, this is your title bar. It shows you the name of your presentation. Whatever name you are giving to your presentation, that will be shown on the title bar. That will be shown on the title bar. Currently, what name is being shown? Who will tell me? Raise your hand. Currently, what name is being shown on the title bar? Raise your hand. Yes, Ihanbir. मैम PowerPoint
Presentation 1 PowerPoint. PowerPoint here is the name of the program, name of the software that you are using. जो आप प्रोग्राम को नेम दे रहे हैं, that is the by default, that is the presentation 1. So whenever you will open your Microsoft PowerPoint, the default name of your presentation, it will be presentation 1. Clear? It will be presentation 1. You can give any name to your presentation. Clear? You can give any name to your presentation, but whenever you are opening your Microsoft PowerPoint, by default means जो पहले से उसको name दिया होगा वो कौन सा होगा? Presentation 1. Clear? Clear everyone till here? कोई doubt यहाँ तक? Okay. On the title bar, the name of your presentation will be shown. Whatever name you will be giving, कोई भी name जो आप देना चाहते हो. Then on the right side of the title bar, you can see the 3 buttons: minimize, maximize or restore down, and close button. These are the 3 control buttons. Minimize करेंगे तो आपकी जो PowerPoint की विंडो है, that will be hide from the desktop. वो आपकी डेस्कटॉप से हाइड हो जाएगी. ठीक है. रीस्टोर करेंगे तो वो क्या होगा? इट विल बी बैक टू योर डेस्कटॉप. इट विल बी सीन बैक ऑन योर डेस्कटॉप. क्लोज बटन से क्या होगा? आपकी PowerPoint की विंडो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी. राजवीर, एनी डाउट? No, ma'am. Okay. So minimize button से क्या होगा? The PowerPoint window, it will be hidden from your desktop on the and it will be shown on your taskbar. ठीक है. Restore down से क्या होगा? या maximize button से क्या होगा? This window will again come appear on your desktop screen. And close button, what it will do? It will close your PowerPoint window. So this was the first component of your PowerPoint window, that is the title bar, which shows you the name of your presentation. Second component, that is your quick access toolbar. The quick access toolbar, it is also present on the left corner of your title bar. Title bar के left side में. See on this left side, this is your quick access toolbar, which by default contains the 3 buttons in it. जब भी आप PowerPoint की विंडो ओपन करोगे, क्विक असेस टूल बार में by default हमारे पास 3 buttons आते हैं. कौन कौन से होते हैं? Undo, redo, save. The 3 buttons on the quick access toolbar. This is your save button. This is your undo and this is your redo. Like see, अगर मैं यहाँ पे कुछ करती हूँ type, I typed presentation. So see these buttons it get active. ये active हो गए. This is your undo button and this is your redo. ठीक है? Clear beta? So these 3 buttons, they are present on the extreme left corner of your title bar, and that is your, and these 3 buttons by default which are present on your quick access toolbar, that is your undo, redo and save. This is your save button, this is your undo and this is your redo button. Clear? Third component of your PowerPoint window, that is your ribbon. When I'm talking about the ribbon, it is placed at the top of the, it is placed at the, this part, below the title bar. You can see in your books also it is labeled ribbon. It contains the tabs and the groups. Ribbon में हमारे पास different types of tabs आते हैं. See, file tab, home tab, insert, design. Ribbon is basically the combination of different tabs and groups. Each tab, it is divided, it is categorized into different kinds of groups.
and in every group we have the similar options related to that group. अब जैसे मेरे पास ये होम टैब है, होम टैब में मेरे पास देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग. अब हर एक ग्रुप के अंदर आई एम हैविंग द डिफरेंट ऑप्शंस. ये सारी ऑप्शंस किसके साथ रिलेटेड है? दे आर रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर ग्रुप. हाँ जी पारुल, कोई डाउट बेटा? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी, मैम जो ये सेंटर है, हम यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हैं? कहाँ पे बेटा? मैम जहाँ पे आपने प्रेजेंट लिखा वहाँ पे. यू कैन टाइप एनीथिंग, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं बेटा. थैंक यू मैम. Okay. So every tab, each and every tab, like home tab we are having, insert tab we are having, design, transitions, हर एक टैब के अंदर हमारे पास different kinds of groups हैं, and these groups they are containing different kinds of options. ये देखो ये options हैं, आप ये options किसके related है? They are related with this particular group. And this particular group, it belongs to this tab. Clear? So ribbon is basically the combination of tabs and groups, and every tab, it is divided into different kind of groups. See this insert tab. Insert tab ke andar we are having so many groups here. Design tab, these groups are present. So each and every tab, it is divided into different kinds of groups. Clear beta? Any doubt? Any doubts to anyone? Shall we move on to the next component? Okay, the third component is your ruler. In your geometry box, you have scale with you. You have scale with you. Yes, that is used to measure the, yes Pavni, very good. That is used to measure the length and the width of your document. In the same way, see, if I consider it as a scale, I can measure the length. I can measure the length with it. I can measure the width with it. So I am considering it as a ruler. ये क्या है मेरा? Ruler. जिसके साथ मैं अपने डॉक्यूमेंट की, अपने ब्लैकबोर्ड की यहाँ पे लेंथ को मेजर कर सकती हूँ. I can measure the width also. So in the same way, Microsoft PowerPoint maybe we are having the rulers with us. See on the top of this, on the top of your slide, you can see this ruler where the numbers are being marked. Right? This is your horizontal ruler. Horizontal means from left to right or from right to left. And vertical, see this vertical ruler? Vertical means from top to bottom. Vertical means from top to bottom. So in PowerPoint, I am having two types of rulers with me. The first one is your horizontal ruler and the second one is your vertical ruler. ठीक है, वर्टिकल रूलर से क्या डिसाइड होगा? आई विल बी एबल टू टेल द लेंथ ऑफ माय स्लाइड, एंड हॉरिजॉन्टल रूलर से आई कैन मेजर द विड्थ ऑफ माय स्लाइड, कि वो कितना ब्रॉड है और कितना टॉल है. क्लियर? सो रूलर से आई कैन मेजर द लेंथ as well as the width of my slide. Clear beta? Rulers clear? Everyone? Any doubt? Okay, very good. Coming upon to the next component of your PowerPoint window, that is your slide pane. Slide pane, what it will do, it is the middle section of your PowerPoint window. This middle section of your PowerPoint window where we can work on the slides, जहाँ पे हम अपनी slides के ऊपर work कर सकते हैं.
दिस मिडल एरिया, ये सारा मिडल एरिया जो है आपका, जहां पे आप अपनी स्लाइड के ऊपर वर्क कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी स्लाइड पेन. इट इज कॉल्ड एज दी स्लाइड पेन. नेक्स्ट कंपोनेंट, it is your navigation pane, slide navigation pane. Slide navigation pane, it is your this area on the left side of your slide. See this area where you can see the slide, thumbnail of the slide. Can you see ये red वाली जो border आपको दिख रहा है? This area, it is your slide navigation pane where every slide is shown in the thumbnail form. Every slide is shown in the thumbnail form. What do you mean by thumbnail? Thumbnail means कि उसकी small image, उस स्लाइड की एक स्मॉल इमेज आपको वो कहाँ पे शो कर रहा है, दैट इज शोन ऑन द स्लाइड नेविगेशन पेन. नाउ सी, वेट, दिस इज योर फुल स्लाइड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर में. इट इज योर फुल स्लाइड. इसका स्मॉल व्यू इट इज बीइंग शोन इन द स्लाइड नेविगेशन पेन. Clear? The full view is shown in the slide pane. यहाँ पे आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है. The small view or the thumbnail of the slide, it is shown in your slide navigation pane, which is present on the left side. Clear everyone? Everyone clear? कोई डाउट किसी को बेटा? Any doubt? Kanisha, Tanisha, Samar, Raghav, everyone clear? Good, Sahaj. Okay, Megha, Kriti, Abhinav, Prabhu. Very good. Okay. Divyam. Okay. चलिए, coming upon to the next component of your PowerPoint window, that is your notes pane, which is present below the slide pane. See here, notes pane. It gives you the space. ये देखो, when let me show it to you again. I clicked on this notes pane that is present at the bottom of the slide pane. I click on it. See, I get some extra space where I can add any kind of note. This is my first presentation. I can add any kind of notes here in the notes pane, which is present below the, these are present below the slide pane. It is for every slide. हर एक slide में आप अपने notes add कर सकते हैं, ठीक है? And these notes they are also called as the speaker notes. जब आपने किसी को presentation दिखानी है, you can write the note here. यहाँ से देख के आप वो read कर सकते हैं, ठीक है? These are the speaker notes also. Clear everyone? This is present under the slide pane. Any आपने अगर कोई यहाँ पे topic लिखा, suppose करो मैंने यहाँ पे लिखा, I write here the name of the chapter Introduction to PowerPoint. Okay, I gave here the title, let us say the page number, that was your page number was your 72. So मैंने यहाँ पे इसका पेज नंबर दे दिया 72. So in my notes, मैं यहाँ पे notes में क्या लिख सकती हूँ? Whatever I want to explain. मैंने इस slide के बारे में जो भी explanation देनी है. For example, today we are going to start a new chapter. ठीक है? Whatever introduction, whatever you want to speak, जो भी आप अपनी presentation दिखाते टाइम जो भी आप बोलना चाहते हो बेटा, that can be added in the note section.
वो हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? दैट कैन बी एडेड इन द नोट्स सेक्शन। क्लियर? क्लियर बेटा? एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज we have the comments here alongside the notes। हमारे पास क्या है? comments। here why we use these comments? we can use it for the reviewer, जिसने ये presentation जिसको हमने दिखानी है, we can use it if we want to leave any kind of comment कि हाँ ये slide में कुछ changes करने हैं, या आपने उसको, आपको ये slide कैसे लगी, जैसे आप अपना फीडबैक देते हैं ना, इफ यू गो टू एनी, इफ यू विजिट एनी वेबसाइट या कुछ भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, आप उसमें अपना फीडबैक देते हैं कि आपने, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो आप उसकी रेटिंग्स करते हैं ना, आप उसकी रेटिंग करते हैं कि आपको यहाँ का फूड कैसा लगा। इसी तरह द कमेंट्स में दे कैन ऐड हाउ दे हैव सीन योर प्रेजेंटेशन, उनको आपकी प्रेजेंटेशन कैसे लगी, अगर वो उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, अगर दे सजेस्ट कि उनको अगर कुछ चाहते हैं कि उसमें ये चेंजेस हो, तो आप उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स जो है दे आर फॉर द रिव्यूअर, वो अपने व्यूज आपकी प्रेजेंटेशन के रिलेटेड कि आपकी प्रेजेंटेशन को कैसी लगी, दे कैन गिव इट ओवर हियर इन द कमेंट्स बॉक्स। ठीक है, दे कैन गिव देयर व्यू ऑन योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वी हैव इज द व्यू बटन्स। सी हियर, कमेंट्स के साथ ही बेटा, कमेंट्स के साथ ही we have this view buttons। this is your normal view, this is your slide sorter view। view buttons क्या करते हैं? it helps you to display your presentation in different format। आपके जैसे आप कोई, अभी आप जैसे मैं आपको दिखाऊं, I am going to show it to you। you are seeing this presentation like this, this is the normal view। बाय डिफॉल्ट जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपको ये नॉर्मल व्यू में दिखाई देता है। दिस इज द नॉर्मल व्यू। यू कैन चेंज इट इन अनदर फॉर्म। ये देखो, दिस इज योर सेकेंड व्यू। ये देखो, स्लाइड सॉर्टर व्यू। दिस इज योर रीडिंग व्यू। ठीक है, एंड दिस इज योर, जस्ट अ मिनट, लेट मी एस्केप इट। This is your full screen mode, slideshow view। Clear? So these are the different types of views in your PowerPoint कि आप अपनी presentation को किस किस वे से देख सकते हो। Normal view, slide sorter view, reading view, and then you have your slideshow view। Clear? Clear? So these are the different types of view buttons। So let me give it back to the normal view। मैं normal view में वापस आई। Next button, next component, sorry, next component we have is the zoom slider। See, buttons के साथ zoom slider, you can increase the size of your slide, you can decrease the size of your slide। Clear? By dragging this slider on the zoom slider। zoom slider से क्या होगा? आपकी स्लाइड का साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए। Clear? So all these components that we have discussed, any doubts to anyone over here? You can raise your hand. Any doubts to anyone? Okay, so yes Divyam। एक्सक्यूज मैम, स्लाइड शो कौन सा होता है? Slide show is when you are viewing your slide in the full screen mode। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेट मी शो इट टू यू। Here, this is your presentation PowerPoint window। When I'm going to click on this slideshow view,
जब मैं यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करूंगी तो यू विल ओनली सी दिस कंटेंट ओनली, आपको सिर्फ ये कंटेंट दिखाई देगा, पावर पॉइंट की विंडो नहीं शो होगी। सी यू आर सीइंग ओनली द फर्स्ट स्लाइड ओवर हियर, आपको बाकी पावर पॉइंट की विंडो नहीं शो हो रही। सो स्लाइड शो इज व्हेन यू आर सीइंग योर प्रेजेंटेशन ऑन द फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन के ऊपर जब आप देख रहे हो। ठीक है बेटा, दिव्यम क्लियर? ओके, so whatever we have done today, all the components you have to revise today.